ओके सो गाइस, हाउ आर यू पीपल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 237 चैप्टर ऑफ हैरिसन्स। ओके, बट उससे पहले सबसे कॉमन सवाल, मेडिसिन है, इतना लंबा शेड्यूल है, इतना लंबा कोर्स है, तो ये ख़त्म कब होगा। तो ऑब्वियसली गाइस, दिस इज़ मेडिसिन। इसके अंदर आपको हर एक चीज़ की डिटेल्ड एप्लीकेशन मिलेगी, लाइक पैथो, फार्मा, माइक्रो, फिजियोलॉजी, एवरीथिंग कैन बी अप्लाइड इन दिस सिंगल सब्जेक्ट। सो ऑब्वियसली चैप्टर्स बहुत सारे हैं, डिटेल्स बहुत सारी है। लाइक इन हैरिसन ओनली 20 पार्ट्स हैं एंड कुल मिला के 492 चैप्टर्स हैं। सो please be persistent and enjoy the lectures. Okay, so without further ado, let's get started. Okay, so this chapter 237, it's more kind of a physiology kind of a chapter. Okay, इसमें हम लोग basic biology of cardiovascular system डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर 5 मेन पॉइंट्स हैं जिनके अंदर ये चैप्टर पूरा डिस्कस हुआ है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द अबाउट द डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, which we kind of know from anatomy, that we'll be discussing. Second up is the discussion about the blood vessel, the vessel wall, vascular tonicity, etc. Third is the discussion about cellular basics of the cardiac contraction, that how the myocyte contracts, the 0, 1, 2, 3, 4 phases of the contraction. Next up will be the control of cardiac performance and output, and finally we'll be reviewing the assessment of cardiac function, like how it is done in the body. Okay, now let us start with the very first part, which is about the developmental biology of the cardiac system. In early development, heart forms early in embryogenesis, as we know, because the blood circulation, nutrients and oxygen supply is very imperative to the tissues. Now the cardiac progenitors, they arise from lateral splanchnic mesoderm and then migrate to form the linear heart tube. Then happens the chamber specification and looping. In this, the linear heart tube differentiates into atria and ventricles. Second heart field cells contribute to the regions like the right atrium and the right ventricle. Okay, so this is a basic about how the atria and ventricles are formed. Next up is the septation and valve formation, which is very imperative. The heart divides into the left and the right sides. Truncus arteriosus separates into aorta and pulmonary artery, and cardiac jelly aids in the development of the heart valves. Like when the vessels are connected at first, they are kind of a jelly which later forms the heart valves. Now, the neural crest cells and the vasculature, these contribute to the aortic arch remodeling and the formation of great vessels. These are sensitive to vitamin A and folic acid deficiencies. Okay, so if in the intrauterine life अगर मदर के अंदर folic acid और vitamin A deficiency है, then there can be defects in these formations like teratology of Fallot and all that we see. Okay, now the coronary artery formation, epicardial cells from the proepicardial organ contribute to smooth muscle and fibroblast in coronary vessels. Now forms the cardiac conduction system. This differentiates from cardiomyocyte precursors. SA node differentiates from sinus venosus, and AV node differentiates from the AV canal. Defects in the formation of the conduction system can cause heart block or Wolff-Parkinson-White syndrome. Okay, so this was all about the developmental biology of the cardiovascular system. Next up are the vascular cells. So the origin of vascular cells, it's from the smooth muscle cells. The upper body arteries are formed from the neural crest, and the lower body arteries are formed from the mesodermal structures. Also, there are some bone marrow derived progenitors which aid in the repair of damaged vessels. And finally, vascular stem cells may contribute to atherosclerotic lesions. Okay, so this was a very brief introduction about the vascular cells. Now let us start with the second part of the chapter, which is about the blood vessel structure and function. So vascular ultrastructure, and there are capillaries which are formed from a monolayer of endothelial cells with pericytes. There are arteries which have a trilaminar structure, intima made of endothelial monolayer, tunica media formed of smooth muscle layer, and adventitia which is formed from extracellular matrix, fibroblast, mast cells and nerve terminals. The large arteries require vasa vasorum for nourishment, and elastic arteries contain elastin-rich layers.
Now, the vascular cell biology. In this, we discuss about the endothelial cells. The endothelial cells regulate permeability, blood flow, thrombosis, and immune response. Dysfunction of the endothelial cells contribute to atherosclerosis, hypertension, and inflammatory diseases. Also, endothelial cells से कुछ factors derive होते हैं which lead to the endothelial growth or vasodilation or vasoconstriction. Okay, so vasodilating factors are nitric oxide, prostacyclin, H2O2. Vasoconstricting factors are endothelin, which are secreted from the endothelium itself. Okay, now vascular smooth muscle cells are there, VMCs. These regulate blood pressure, vessel tone, and remodeling, like when the vessel has to compress, when it has to dilate. So, these muscle cells will contribute to the same. Okay, now excessive proliferation of vascular smooth muscle cells contributes to atherosclerosis and hypertension. With time, the elastic capability of the vessels decreases. So atherosclerosis progresses with age also. Okay. Now these vascular muscles, smooth muscle cells, they also secrete the extracellular matrix component, and the contraction controlled by calcium influx. Their contraction is controlled by calcium influx and kinase or phosphate balance. Okay, so this was about the vascular smooth muscle cell contractions. Next up is the control of the vascular smooth muscle cell tone, like how the tone of a blood vessel is regulated. So, other than the vascular smooth muscle cell contraction, there are autonomic nervous system methods which can control the tone of the blood vessel. Okay, so the sympathetic factors like norepinephrine, alpha 1, which act on alpha 1, alpha 2 receptors, they result in vasoconstriction. The parasympathetic factors like acetylcholine, which act on the muscarinic receptors, lead to vasodilation and dilatation, and the nitrogenic and peptidogenic neurons, which release NO, nitric oxide, vasoinhibitory peptide, CGRP protein, these all result in vasodilatation. Okay, now there are some endothelial effectors like mechanical and biochemical stimuli are there which regulate the vascular smooth muscle tone. Circulating modulators like norepinephrine and natriuretic peptides can aid in this method. Okay, so this was about the vascular modeling, remodeling, tonicity. Now it's about vascular growth and regeneration. Like how are the blood vessels formed or how do they regenerate? So this is about arteriogenesis and angiogenesis. Arteriogenesis is the recruitment and expansion of pre-existing arteries, and angiogenesis refers to the growth of new capillaries. So इसके लिए जो factors responsible होते हैं, these are vascular endothelial growth factor and FGF. Okay, so these stimulate the endothelial cell proliferation. FGF is the fibroblast growth factor. Okay, now semiphorenes guide the vascular patterning. Okay, so now the question arises like how much potential is there for vascular regeneration? Normal adult mammals lack new vessel formation. Emerging research may enable full vascular regeneration, like complete new vessel formation is not much possible in adult mammals. Okay, now the origin of vascular cells, from where do they arise? The smooth muscle cell origin are there, like we have already discussed this. Upper body arteries arise from neural crest and lower body arteries arise from mesodermal structures, and bone marrow derived progenitors aid in repair of damaged vessels. Vascular stem cell may contribute to atherosclerotic lesions. We have discussed it already. Okay, so this completes the third part of the chapter, which was about the blood vessel itself. Okay. Next up is the cellular basics of cardiac contraction. So first of all, we have to study about the cardiac myocyte. So the cardiac structure, ultrastructure discusses about the formation of cardiac myocytes. Cardiomyocytes, the length is about 60 to 140 micrometer. Diameter is about 70 to 25 micrometers. They contain multiple myofibrils composed of repeating sarcomeres. Cytoplasms contain nucleus, mitochondria, and sarcoplasmic reticulum. In the sarcomere structure, there are the sarcomere, of course, is the functional unit of contraction. The sarcomere structure lies between two Z lines, the dark bands which are there, we know this. Okay, the length is 1.6 to 2.2 micrometer, which varies with each contraction or stretch. Like in contraction, this length will decrease, and in stretch or diastole, it will increase. The A band is dark 1.5 micrometer, it's constant in length, and I bands which are light, these are variable in length.
Also, these contain interdigitating thick myosin and thin actin filaments, like a normal sarcomere which is there. Okay, now the contractile process itself, it's also based on the sliding filament model. Okay, now in this, the thick filaments myosin 10 nanometer remain constant in length, while the thin filaments actin 5 nanometer slide deeper into the A band during contraction. Next up is the cross-bridge cycling. Myosin heads interact with actin using ATP energy, and the regulation is by troponin complex, calcium, etc. So troponin complex C, troponin C, troponin I, and troponin T, and tropomyosin control the actin-myosin interaction. Calcium binds to troponin C, it exposes the actin binding sites and initiates contraction, just like a skeletal muscle contraction. So same है, जैसे skeletal muscle contract होती है, same concept चल रहा है. Next is the ATP hydrolysis. This enables myosin head movements and detachment. We know this. So what are the key points in contraction? There's something called titin. It connects myosin to Z line. So this is what contributes to the elasticity of the cardiomyocyte. There is dystrophin, which links sarcomere to cell membrane, and the mutation in dystrophin protein formation can lead to cardiomyopathies. Okay, so the cardiac activation in the stages of contraction, first of all, is the cardiac activation. A resting cardiomyocyte which has a electrically polarized transmembrane potential of minus 80 to minus 100 millivolts. The sodium potassium ATPase pump maintains high intracellular potassium and low sodium. The calcium levels, extracellular calcium is more than intracellular calcium. Okay, so there are 4 basic phases: 0, 1, 2, 3. 0 phase, the rapid depolarization phase, in which sodium influx occurs. Sodium influx होगा सबसे पहले, which is the phase 0. हम लोगों ने वो ग्राफ देखा हुआ होता है कई बार. Okay, then phase 1 contributes is about the initial repolarization phase, in which potassium starts going out, but this is a slow phase. Then occurs the plateau phase, slow calcium influx via the L-type calcium channels, and then occurs rapid repolarization with complete potassium outflow. Okay, and finally the phase 4 is or the resting potential of the membrane is achieved again. Okay, so the calcium induced calcium release, CICR is there. Like L-type calcium channels जो होती हैं वो calcium की entry allow करती हैं. Because of this, calcium release from the sarcoplasmic reticulum also occurs. इसकी वजह से sarcoplasmic reticulum से भी calcium release होने लग जाता है via ryanodine receptors. This calcium binds to troponin C, which activates contraction. So ये L-type calcium channels का importance बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. Calcium induced calcium release is seen, which is not seen in normal skeletal muscle. It is seen in cardiomyocyte contraction. Next up are the SERCA2a, the calcium ATPase. This reuptakes calcium into the sarcoplasmic reticulum, which again leads to the relaxation of muscle. So ये तो normal physiologic process था, like phase 0, 1, 2, 3, 4 are there. Okay. Now how this is regulated? Again, this is regulated by the nervous system. The adrenergic stimulation, beta agonist, increase the formation of cyclic AMP, which leads to PK activation, जिसकी वजह से calcium phosphorylate होगा and phospholammin बनेगा. Enhanced calcium influx होगा and sarcoplasmic reticulum की loading ज़्यादा होगी. So stronger contractions are seen जब भी adrenergic stimulation होगा. Digitalis glycosides, digitalis हम लोग जानते हैं एरिथमियाज के अंदर हम लोग प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं. So digitalis glycosides, these inhibit sodium potassium ATPase. हार्ट फेलियर के अंदर हम लोग इसको प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, I guess. Okay, inhibit sodium potassium ATPase. So this will indirectly increase this intracellular calcium, and this will also result in stronger contractions. Okay, so digitalis glycosides also result in stronger contractions. So what can be the diseases related to the cardiac performance or the contractions? The mutations in sarcomeric cytoskeletal proteins can lead to genetic cardiomyopathies, and defective calcium handling by SERCA2a or ryanodine R2 mutations. These can result in heart failure or arrhythmias. Okay, so this was about the basic contraction part. Next up is the control of the cardiac performance and output, like how it is controlled. So the determinants of ventricular stroke volume,
The cardiac performance depends on three key factors. Okay, so the preload, the initial length of the cardiac muscle at the onset of contraction, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले कार्डियोमायोसाइट और द लेंथ ऑफ कार्डियक मसल कितनी है, दैट इज प्रीलोड. आफ्टर लोड, द टेंशन एट द हार्ट मस्ट डेवलप ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट वॉल के अंदर कितनी फोर्स डेवलप होना चाहिए, दैट इज आफ्टर लोड. एंड द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, द इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ द हार्ट मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एट अ गिवन प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, कि एक मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल पावर कितनी है, दैट इज ऑल अबाउट दी cardiac performance. This depends on preload, afterload and contractility of the muscle itself. Okay, so these are the determinants of ventricular stroke volume. So जितना ज़्यादा एक ventricle blood को pump out कर रहा होगा उतना ज़्यादा हमें cardiac output मिलेगा. So of course this will result in increased cardiac output. Next up is the role of preload or the muscle length. Preload determines the sarcomeric length at the beginning of contraction. हम लोग बात कर चुके हैं. So the optimal contractile force occurs at the sarcomere length of 2.2 micrometer. अगर 2.2 micrometer Z to Z line का difference है तो it will be an effective contraction. Okay. The Starling law of for heart states that the ventricular contraction force is proportional to end diastolic volume EDV. Like जितना ज़्यादा heart fill हो रहा होगा at the time of contraction उतना ही source से वो heart pump करेगा. So ventricular contraction is directly proportional to the end diastolic volume. ओके, एंड डायस्टोलिक प्रेशर सर्व्स एज अ सरोगेट मेजर ऑफ प्रीलोड. अगर हमें प्रीलोड देखना है तो हम लोग एंड डायस्टोलिक प्रेशर अगर मेजर कर लेते हैं सो हम लोग प्रीलोड का उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं. ओके, so थर्ड पार्ट इज वेंट्रिकुलर फंक्शन एंड कार्डियक परफॉर्मेंस. स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रीलोड एंड इनवर्सली रिलेटेड टू आफ्टरलोड. ऑब्वियसली बिफोर कॉन्ट्रैक्शन द फिलिंग ऑफ द हार्ट मस्ट बी ग्रेट, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट होगी. ओके, द रिड्यूस कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द कार्डियक वॉल्स रिजल्ट्स इन लोअर स्ट्रोक वॉल्यूम डिस्पाइट नॉर्मल और हाई ईडीवी. तो हम लोग इसके लिए वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व ड्रॉ कर सकते हैं. दिस रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर एंड स्ट्रोक वर्क. अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अच्छी खासी है या फिर ज़्यादा भी है लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल पावर अगर हार्ट की कम है देन ऑफकोर्स स्ट्रोक वॉल्यूम कम ही होने वाली है. ओके, नाउ इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी शिफ्ट द कर्व अपवर्ड एंड लेफ्टवर्ड्स. अगर कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ज़्यादा होगी हार्ट की तो कर्व अपवर्ड एंड लेफ्टवर्ड जाएगा. ये बुक में आपका डायग्राम दिया हुआ है, यू कैन सी दिस. ओके, और अगर डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी तो कर्व डाउनवर्ड एंड राइटवर्ड जाएगा, यानी कि कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होगा. ओके, सो द फोर्थ पैरामीटर इज वेंट्रिकुलर आफ्टरलोड. आफ्टरलोड इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच द हार्ट मस्ट पंप. ओके, सो दिस इज डिटरमिन्ड बाय एओर्टिक इम्पिडेंस, लाइक एओर्टा कितना बैक प्रेशर या फिर एओर्टिक रेजिस्टेंस कितना है, दिस कैन बी अ मेजर ऑफ आफ्टरलोड. द वेंट्रिकुलर वॉल्यूम एंड मायोकार्डियल टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक लाइक वॉल थिकनेस, चेम्बर साइज. Laplace law already we know that myocardial tension is equal to ventricular pressure into the radius and divided by the wall thickness. Like ventricular pressure और radius ज़्यादा होने चाहिए, वॉल थिकनेस अगर कम होगी तो कार्डियोमायोसाइट्स के अंदर टेंशन ज़्यादा डेवलप होगी. सो द डायलेटेड वेंट्रिकल्स दिस विल एक्सपीरियंस हायर आफ्टरलोड. ओके, एंड हाइपरट्रोफाइड वेंट्रिकल्स एक्सपीरियंस अ लोअर आफ्टरलोड. ये इस फॉर्मूले से हम लोग ईजिली बता सकते हैं. Okay, elevated afterload reduces myocardial fiber shortening and stroke volume. Of course, afterload, like if the resistance is great, तो जो myocardial fiber की जो contractility है वो and stroke volume दोनों ही reduce हो जाएंगे. What's the pathophysiology? Increased afterload in heart results to further reduction in the cardiac output. Vasodilators can reduce the afterload, which will improve the cardiac output. If the aorta is डायलेटेड तो रेजिस्टेंस कम होगा, सो आफ्टरलोड कम होगा, देन ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा. एंड द फिफ्थ पैरामीटर इज द होम्योस्टैटिक रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट. इट कैन बी मेंटेन्ड बाय adrenergic stimulation which will result in increase in heart rate, contractility and venous return. And baroreceptor feedback mechanism also contribute to the homeostatic regulation of cardiac output. There can be compensation which can sustain the cardiac output despite moderate reductions in blood volume or atrial function. And system engineering principle aid in the understanding complex cardiac interactions. इसके ऊपर रिसर्च अभी चल रही है. Okay, so next up in the sequence is the response to exercise.
So the exercise induces an integrated response in preload, afterload and contractility. Obviously, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर डिमांड इंक्रीज हो जाती है. सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच इंक्रीज द प्रीलोड? हाइपरवेंटिलेशन एंड स्केलेटल मसल पम्प, बिकॉज एक्सरसाइज के टाइम पर आप रनिंग कर रहे हैं सपोजिटली, तो वो ब्लड टू द हार्ट इंक्रीज, द वीनस रिटर्न टू द हार्ट इंक्रीजेस. Okay, there is venoconstriction. Okay, and what are the factors which increase contractility? The adrenergic stimulation and increase heart rate, increase the contractility of the heart. And afterload को कौन modify कर रहा है? Vasodilatation होगा तो afterload कम हो जाएगा. And active muscles minimizes excessive afterload increase. And cardiac output can rise up to 5 times above resting levels and with moderate arterial pressure increase. If the arterial pressure is increased, तो कार्डिक जो आउटपुट है वो अप टू 5 टाइम्स दैन रेस्टिंग लेवल्स हो सकता है एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज. ओके, सो ये जो कार्डिक परफॉर्मेंस के जो आउटपुट के जो कंट्रोल्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो देयर इज द 7th पॉइंट इज अबाउट द कैल्शियम डायनामिक्स इन एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग. ओके, 2 कैल्शियम साइकिल्स रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हम लोग बात कर चुके हैं. इंट्रासेलुलर साइकिल है, लाइक कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम द साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस बाइंड्स टू ट्रोपोनिन सी एंड इनिशिएट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियोमायोसाइट. Calcium reuptake is there into the sarcoplasmic reticulum via active transport which facilitates relaxation. Extracellular cycle क्या है कि हमने बोला C1C2 cycle. Calcium enters through the plasma membrane channels and calcium is removed via the sodium calcium exchanger and plasma membrane calcium pump. Efficient calcium cycling is critical for normal myocardial function. Okay, that is there is calcium induced calcium release in the cardiomyocyte. L-type calcium channels होते हैं. Okay, so the determinants of ventricular performance, ventricular preload is there. The 8th point is about the ventricular performance. तो ventricular preload को कौन कौन डिटरमिन कर रहा है? हाँ, ये एक टेबल बनी हुई थी हैरिसन के अंदर. यू कैन डिस्कस, यू कैन रीड दैट लेटर. सो ventricular preload को ब्लड वॉल्यूम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम एंड बॉडी पोजिशन, intrathoracic and intrapericardial pressures, venous tone and skeletal muscle pump एंड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे फैक्टर्स जो हैं जो कि वेंट्रिकुलर प्रीलोड यानी कि वेंट्रिकल में बिफोर कॉन्ट्रैक्शन कितना ब्लड फिल हो रहा है इसको मॉनिटर या फिर अफेक्ट कर सकते हैं. वेंट्रिकुलर आफ्टरलोड को कौन कौन अफेक्ट कर रहा है? तो सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, हम लोग बोल चुके हैं आर्टरीज के अंदर, एओर्टा के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो. आर्टीरियल इलास्टिसिटी, लाइक इफ द लैटिस वेंट्रिकल फिनोमेना, ओके, कि ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड हो सकती है एट द टाइम ऑफ फिलिंग एंड डायस्टोल के टाइम पे भी कीप्स ऑन फ्लोइंग द ब्लड. सो दैट इज आर्टीरियल इलास्टिसिटी. आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम, ventricular wall tension, radius and wall thickness, all these can alter and affect the ventricular afterload. And what are the factors which regulate myocardial contractility? Myocardial contractility is increased by intramyocardial calcium, cardiac adrenergic nerve activity, circulating catecholamines, heart rate, exogenous inotropic agents. Inotropic means which increase the force of contraction. And this rate is decreased by myocardial ischemia, cell death, necrosis, apoptosis, autophagy, genetic or hemodynamic alterations in sarcomeric proteins, myocardial fibrosis, chronic neurohormonal activation, ventricular remodeling and chronic hypertrophy. इन सबसे myocardial contraction decrease हो जाएगा. Okay, so there are integrated cardiac regulation mechanisms like stroke volume, heart rate, peripheral resistance. All these interact to regulate the cardiac output and arterial pressure. Okay, we know that stroke volume into heart rate determines the cardiac output. So ये सब लोग of course इंक्लूड होके ही कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करने वाले हैं. एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स ये आफ्टरलोड को अफेक्ट कर ही रहा है. Baroreceptors in the carotid and aortic arch, these provide the feedback to adjust the heart rate, peripheral resistance, venous return and contractility. The pathophysiology of heart failure involves excessive afterload. या तो afterload ज़्यादा हो जाए तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा. inadequate contractility, कार्डियोमायोसाइट को इस्कीमिया हो रहा है या डेथ हो गई है कार्डियोमायोसाइट की, some percentage of heart is functioning only, so वो inadequate contractility रिजल्ट करेगा. and the compensatory maladaptations like there is hypertrophic increase in the size, so उसमें भी आफ्टरलोड अफेक्ट होता है. so इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से कोई हार्ट फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी डेवलप हो सकती है. सो वी हैव टू नो द नॉर्मल फिजियोलॉजी टू अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी एंड देन वी विल प्रोसीड टू द मेडिसिन एस्पेक्ट कि उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है एंड हाउ कैन बी ट्रीटेड.
ओके, जो हमने इतना बड़ा डिस्कशन सा किया था अभी एक कार्डिक सिस्टम मॉनिटरिंग का, तो इसका जो समरी, कार्डिक आउटपुट इज डिटरमिन्ड बाय प्रीलोड, आफ्टरलोड एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी. दिस इज बेसिक फिजियोलॉजी. ओके, इसमें कुछ भी नया नहीं है. Starling's law describes the preload stroke volume relationship. We know this. Afterload is influenced by systemic vascular resistance and ventricular properties. Myocardial contractility depends on calcium handling, adrenergic input, and myocardial integrity. Exercise enhances the cardiac performance through adaptive changes in preload, afterload, and contractility. That's why, like normally we say no कि exercise करते रहना चाहिए. Like heart keeps on exercising. If you exercise, your heart also exercises. तो प्रीलोड, आफ्टरलोड और कार्डियोमायोसाइट कॉन्ट्रैक्टिलिटी मेंटेन रहती है. तो एकदम से कभी अगर आपकी डिमांड इंक्रीज होती है तो कार्डियक एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यू वोंट फेस एनी इश्यूज, राइट. ओके, लाइक एंड लास्टली होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म मेंटेन कार्डियक आउटपुट डिस्पाइट फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस. कोई चैलेंज है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी होम्योस्टैसिस के थ्रू, नर्व सप्लाई के थ्रू, एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्सेज के थ्रू आपका कार्डियक आउटपुट मेंटेन किया जाएगा. अगर 5 टाइम्स चाहिए तो 5 टाइम्स भी इंक्रीज किया जा सकता है. ओके, सो दिस कंप्लीट्स द फोर्थ पार्ट आई गेस ऑफ द चैप्टर विच वाज अबाउट द कंट्रोल ऑफ कार्डियक परफॉर्मेंस एंड आउटपुट. एंड नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट विच इज अबाउट द असेसमेंट ऑफ कार्डियक फंक्शंस. सो हम लोग कैसे कैसे असेस कर सकते हैं. फर्स्ट अप, several techniques are used to evaluate cardiac function in clinical practice. Cardiac output and stroke volume may remain normal even in heart failure. Ejection fraction, EF, a key index of cardiac function is the ejection fraction. Like after diastole, कितना हार्ट फेल हुआ था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम थी, और उसके अंदर से कितना स्ट्रोक वॉल्यूम में इजेक्ट हुआ है, दैट इज इजेक्शन फ्रैक्शन, स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन दी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. ये नॉर्मली 67 ± 8% होना चाहिए. इफ दिस इज ऑल्टर्ड देन देयर माइट बी सम अंडरलाइंग डिजीज. वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम्स कितनी है. नॉर्मल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज 75 ± 20 ml per meter square, and normal end systolic volume is 25 ± 7 ml per meter square. Elevated values indicate left ventricular systolic dysfunction. अगर ये end diastolic volume increased है या systolic volume increased है, like left ventricle के अंदर या तो dilatation हो गया है या फिर myocytes की contractility कम हो गई है, इसी की वजह से वो हार्ट फेल्ड रह रहा है, उसमें से स्ट्रोक वॉल्यूम में फ्रैक्शन इजेक्ट नहीं हो पा रहा है. So what are the diagnostic techniques? There are some invasive and non-invasive methods. The non-invasive methods include echocardiography, radionuclide scintigraphy, and cardiac MRI. These provide data on क्या क्या डेटा देंगे हमें. वेंट्रिकुलर वॉल्यूम के बारे में हमें बताते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में डिटेल्स आ सकती हैं, रीजनल मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, एंड टिश्यू कैरेक्टराइजेशन जो कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट है. ये सारी हमें डिटेल्स से पता चल सकती हैं. And what are the limitations? Particular loading and conditions, these affect the accuracy. Okay, and depressed ejection fraction and low cardiac output may also be seen in hypovolemia and acute hypertension. So it's not कि हर बार ही वो कोई cardiac anomaly हो. It might be कि hypertension है या फिर volume of the blood body के अंदर कम है, तो भी ejection fraction हमें कम मिल सकता है. Okay, so there is a pressure volume relationship between the ventricular performance and systolic pressure volume relationship. This is called ESPVR. Okay, this is a load independent index of ventricular performance. As myocardial contractility decreases and systolic volume rises at any given pressure. कितना भी प्रेशर इंक्रीज हो, अगर कार्डियोमायोसाइट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ही नहीं है तो आफ्टर सिस्टोल वॉल्यूम कम ही होनी, वॉल्यूम इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना है, लाइक स्ट्रोक वॉल्यूम कम होनी है. सो द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो द फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड दैट इज लेफ्ट इन द हार्ट विल इंक्रीज. ओके, सो दिस इज अबाउट द ESPVR. So there is an invasive measurement of ESPVR. This adds precision but is impractical for routine clinical use. So what are the emerging techniques? There is cardiopulmonary exercise testing, and there are some wearable or implantable cardiac monitoring devices. Okay, so this was about it. And next up is the diastolic function. Diastolic function को यानी कि diastole के अंदर heart relaxed है, heart की filling of the blood is on. Okay, so the determinants of ventricular filling are myocardial relaxation speed, कि कार्डियोमायोसाइट कॉन्ट्रैक्शन के बाद में कितने टाइम में रिलैक्स हो रहा है, दैट इज डायस्टोल
myocardial relaxation speed. The ventricular wall stiffness, if the stiffness is there, okay, this increases in hypertrophy, fibrosis, amyloid deposition, or pericardial constraint. So this will affect the ventricular filling. All right. There is something called as Doppler echocardiography. This measures flow velocity across the mitral valve. Mitral valve is the bicuspid valve, which is on the left side of the heart. So वहाँ से कितनी स्पीड से ब्लड फ्लो कर रहा है, फ्लो वेलोसिटी कितनी है, उसे मेजर करने के लिए हम लोग डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं. दिस ऑल्सो हेल्प डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ नॉर्मल फ्रॉम इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन. ओके, नॉर्मल वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन और इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू. सो व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ इम्पेयर्ड डायस्टोलिक फंक्शन? There is some mild dysfunction which can result in reduced early diastolic filling, increased atrial contraction, or there can be severe dysfunction जिसकी वजह से pseudo normalization is there due to high left atrial pressure. Like ventricles fill up अपने आप से नहीं हो पा रहे थे, बट एट्रिया ने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि there is pseudo normalization, like normal ejection fraction restore हो रहा है, but the anomaly or the problem is still there. Okay, so this was about the diastole function. There is something called as cardiac metabolism, which is basically the energy demand of the heart itself. Heart को हम जानते हैं coronary artery supply कर रहे हैं. So heart also requires ATP for contraction, ionic balance and homeostasis. The heart's energy demand is determined by tension development, contraction frequency and the contractility of the cardiomyocytes. सो हार्ट के पास क्या क्या एनर्जी सोर्सेज हैं? एस्टाइल कोएंजाइम ए, जिसको फ्री फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म से डिराइव करेगा हार्ट. प्राइमरी सोर्स फास्टिंग स्टेट के अंदर फ्री फैटी एसिड से एस्टाइल कोलिन ए बनाते हैं. नॉर्मल स्टेट के अंदर ग्लूकोज, लैक्टेट, अमीनो एसिड्स हैं. कीटोन बॉडीज ऑल्सो कैन बी यूज बाय द हार्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. Okay, so the glucose metabolism, this increases with high blood glucose and insulin, which is in fed state. This also increases in cardiac workload and ischemia, जिसके अंदर glycolysis prefer कर रहा होता है heart. And in, of course, in exercise, lactate utilization increases because lactate formation is there in exercise, no? Okay, and this glucose metabolism decreases with adrenergic stimulation. Adrenergic stimulation फ्री फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म को फेवर कर रहा होता है. एंड सीवियर स्कीमिया, इफ देयर सीवियर स्कीमिया लाइक कार्डियोमायोसाइट को ऑक्सीजन सप्लाई है ही नहीं, देन इट विल स्विच टू एनारोबिक मोड. सो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस विल बी देयर, which is of course a slower and reduced lesser process as compared to aerobic glycolysis. There will be reduced ATP production and myocardial dysfunction will also be seen. Okay, now a very important component is creatine phosphate. This serves as energy reserve in myocardial cell and depletes first in energy deficient states. Okay, now there is regeneration of cardiac tissue. Okay, can the cardiac tissue regenerate? So the cardiomyocytes have limited regenerative capacity. Adult mammalian cells are fully differentiated and lack substantial regenerative ability. Like if due to some ischemia the cardiomyocyte dies, so that particular part of the heart cannot function back normally. Okay, immature heart cells although have some potential for repair which declines with age. Like as the age progresses, the regenerative capacity of cardiomyocyte will decrease. There is some current research going on to investigate the methods to temporarily enhance cardiac repair mechanisms. The goal is to reconstruct infarcted or failing myocardium. Okay, so what's the conclusion of this whole discussion? कार्डियक फंक्शन असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. कार्डियक फंक्शन असेसमेंट इन्वॉल्व्स मल्टीपल पैरामीटर्स बियॉन्ड जस्ट स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट. सिर्फ स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट नहीं, प्री लोड, आफ्टर लोड एंड ऑल दैट इज ऑल्सो डिटरमिन्ड. Ejection fraction and ventricular volumes are the key indicators but are influenced by loading conditions. Non-invasive imaging techniques provide critical functional insights, and emerging technological and metabolic understanding is continuing to provide advanced cardiac care. Okay, so this completes your chapter 237 of the Harrison's Principle of Internal Medicine. ये काफ़ी important chapter है to understand the basic biology of how the cardiomyocyte is functioning, कैसा उसका contraction है. On the basis of this, we will be able to
डिस्कस द एक्चुअल मेडिसिन. ओके, सो 47 चैप्टर हैं इस यूनिट के अंदर. ये सिर्फ सेकेंड चैप्टर है. So keep your spirits high and keep learning. Okay. So okay, keep learning, and you can also read the chapter from Harrison's textbook. It will be very easy for you to understand it now. Okay. So thanks for watching. Like, share, subscribe. Take care. Bye bye.